Good morning, all of you. Sorry, good afternoon, all of you. So, we are meeting after a long, and I hope you have attended your PISA test. And here we are for our chapter 3, second session on simultaneous linear equation with two variables. I'm here to discuss today about the first method of solving linear equation, that is called elimination method. One of the easiest and most of the time used method is elimination method. As you remember that we have started with simultaneous equation, linear equation with two variables. The general form is something with x plus by plus c is equal to 0. And when we represent this equations, when we are given with the equation to find the solution, okay, so we are using all algebraic method right now, how to find the solution of the equation. Now here when I say solution of the equation means I assume that all are consistent and there exists a solution for it. Okay, and that would be a common solution. So welcome you all for the class and let's begin with the example how to solve this. Okay, so I take the first example here. So 2x plus y is equal to 7. Okay, and the second equation I take it as x minus y is equal to 2. Okay, these are the two equations given. We need to find out the values of x and y. That is called the common solution for the equation and using the method elimination. So how to do it? Simply what we have to do here, the method itself suggests you elimination. What do you mean by elimination? Eliminate, to remove. So that means what are we going to do here? Either by addition or by subtraction. You've got only two options, either by addition or by subtraction. You will try to get rid of one of the variables. Okay, that's the method. What does it say? That out of 2, we will try to remove one of the variables and hence we get for the value of 1. And once you get the value of one variable, you can find out the other. So let's see how to do it. To get rid of it, we have to do some other steps. But here I have taken a very simple example. So let's see. If I add this 2, now before adding or subtracting or to decide what I'm going to do, we have to look for the equation. Okay? Looking for the equation means we have to look at the coefficients of the variables. So here the coefficient is 2 and 1. Here the coefficient is 1 and minus 1. So for elimination method, this is a mental process. What I'm saying, you don't have to write anything. For elimination method, you have to see or you have to look for a variable which is very easy to eliminate, to get rid of. अब उसके लिए क्या condition होनी चाहिए? The coefficient should be opposite of each other. कोई भी एक वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट होगा तो क्या होगा? आप ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा. So look at it, it is 1 and minus 1. So here, if I take this as equation 1, I'm so sorry. If I take this as equation 1, and if I take this as equation 2, so adding 1 and 2. Now, till now in algebra, you used to follow the horizontal method. Here we are going to follow the vertical method. Okay, so 2x plus y is equal to 7 and x minus y is equal to 2. We write one below the other. Okay, if it is not given, you have to arrange that, you x below x and y below y. And now when I add these two equations, what will happen? 2x plus x, 3x, y minus y get cancelled and it becomes 0. 7 plus 2, 9. So what do you got now? Look at it. 3x is equal to 9. So that means what is x is equal to? So 9 upon 3. Cancellation, I get the value of x as 3. Did you understand? So we get it easily, the value of the first variable. I hope you understood one of the simplest method in solving this equation. When you are given two equations, you have to mentally think first of all that what I'm going to do. Am I going to add or subtract? And before that, are you getting the directly coefficient equal? So looking at the equation, I feel okay, I don't have to do anything further. Simply I have to add because the coefficient of these two are same but with opposite sign, and hence when I add it, it will give me 0. So I add,
I get this as 0 and I get only 3x as 9, so x is 3. And now substitute pick any one of the equation, like, so say using x is equal to 3. If I'm using equation 1, in equation 1, what do I get? 2 into 3 plus y is equal to 7. And therefore 6 plus y is equal to 7. And that is y is equal to 7 minus 6. That is y is equal to 1. So we get the solution at. If you see, you don't have in your textbook, but otherwise we used to write this previously as, or the solution set is 3, 1. Please remember always the value of x is first and then the value of 1, because you know that it is related to your coordinate system also, coordinate geometry. So always first x and then 1. I hope that is clear to you. Quickly identifying the coefficients. If they are opposite of each other, simply add them. Okay, and get rid of one of the variable by adding. So you get the value of the next variable. Substitute that in any one of the equation. कोई भी एक equation आप select करिए. You substitute the value and you get the other variable too. Okay, so that's your answer here. Now, if I'll take another example where the coefficients are not same. In that case, what will we do? So let's take the one example. Okay, look at the second example. If I'm taking 3x minus 4y is equal to 10, and the second example second equation I'm taking is 5x minus 3y is equal to 24. Now, what did I say the first step? Yeah, those who joined me late, kindly pay attention to the example and then you just revise the video and look at later, watch it later. So now, 3x minus 4y, that is coefficient of x is 3 and this is minus 4. Coefficient, the other equation for x is 5 and this is minus 3. So, अब x के देखते हैं. 3 and 5, y के है minus 4 and minus 3. They are not opposite to each other. But what does the method say? We have to get rid of one. मतलब कि एक को हमें निकाल देना है. अब इसमें please remember any one you can do it. Any one. ठीक है? और हमेशा एक ही एक टाइम पे जीरो होगा. दोनों नहीं हो सकते. जब दोनों जीरो हो गए इसका मतलब कि वो infinite solution है या फिर solution does not exist है. So please look at this type of question. अब suppose मैं यहाँ decide करती हूँ. Okay? कि मुझे यहाँ कैलकुलेशन इजी, तो आप देखेंगे कि दोनों नंबर्स छोटे हैं तो कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट का सवाल ही नहीं. तो जब कोएफिशिएंट डायरेक्टली जीरो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट नहीं है, तब हमें क्या करना है, हमें पहले उसको इक्वल बनाना पड़ेगा. तो कैसे, वो याद रखिए. सपोज यहाँ पे मुझे, प्लीज याद रखिए, सपोज यहाँ पे मुझे किसी एक को डिलीट करना है. अब आप कहोगे मैम एक्स लेंगे या वाई लेंगे, सब टू आवर चॉइस. ठीक है, कोई भी एक आप सिलेक्ट करेंगे. सपोज आई एम सिलेक्टिंग y here कि मुझे y को get rid करना है, मतलब मुझे y को eliminate करना है. तो मुझे क्या करना है? I hope I'm very clear to everyone. Look at me, please listen to me what I'm saying. Elimination method में किसी एक को हमें eliminate करना है, मतलब कि निकालना है. उसके लिए हमें क्या करना है, तो coefficients हमें same but with opposite sign होने चाहिए. Okay? Same with opposite sign करने के लिए या तो हम add करेंगे या तो हम subtract करेंगे. तो उसके लिए basic condition मैं क्या कहूंगी, पहले तो क्या होने चाहिए, उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए. तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सो वी हैव टू मेक इट इक्वल. कैसे इक्वल करेंगे? बाय मल्टीप्लाई. तो अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी गेट द सेम कोएफिशिएंट. ओके, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ y को, जिसके मैं कोएफिशिएंट सेम बनाऊंगी. कैसे? यहाँ पे ये क्या है 4, इसका क्या है 3. ओके, पहले हम प्लस माइनस साइन के लिए नहीं जाएंगे, पहले हम सिर्फ कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे. तो यदि मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 जो मेरा है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जो इक्वेशन 2 है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 12, और यहाँ क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 12, बन गया इक्वल. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4. आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया. एलसीएम आपको सिंपली क्या करना है,
जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट का एलसीएम लेना है। अब यहाँ तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो सिंपली आई मल्टीप्लाई हियर एंड द दूसरे का उधर, आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम। ओके, सो व्हाट डू आई गेट द इक्वेशन मल्टीप्लाइंग दिस बाय 3। ओके, तो पूरे इक्वेशन को करना है। प्लीज 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 रिमेंबर, आप लोगों का सबसे ज्यादा हरी में सब बच्चे, आई नो सम ऑफ यू आर राइटिंग द आंसर, बट द कॉमन मिस्टेक आई गेट इट, फॉरगेट। क्या फॉरगेट? कैसे कि 3 है वो इसको मल्टीप्लाई किया इसको भूल गए, इसे किया इसको भूल गए, so you have to multiply all the terms with 3, otherwise change हो जाएगा and we don't want to change our question. So 3 3s are 9x minus 12y is equal to 30. ठीक है, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ because I have to write up the sum, so I'm just repeating here, I'm sorry. So 9x minus 12y is equal to 30, और जहाँ यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, what do I get? 5 4s are 20x minus 12y is equal to 24 4s. How much is 24 4s? So it becomes 96. I hope I'm right. Yes. And now what are you going to do? Now आप कहोगे कि हाँ मैम हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है? तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि दोनों की साइन सेम है, हमें क्या चाहिए? अलग चाहिए। तो जब अलग है तो सिंपली ऐड करो, सेम है तो सबट्रैक्ट करो। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो आई डू सबट्रैक्शन हियर, तो जब मैं सबट्रैक्ट कर रही हूँ तो क्या होगा? सबकी साइन चेंज हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। अभी फिर से आगे जाने से पहले मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, हमें 2 इक्वेशन दिए होंगे, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए पहला स्टेप क्या है? आप उसके कोएफिशिएंट को चेक करिए। यदि कोई भी वेरिएबल, एक वेरिएबल के उन दोनों कोएफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में, तो सिंपली ऐड या सबट्रैक्ट करिए। इफ नॉट, यू हैव टू मेक देम इक्वल बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देयर कोएफिशिएंट। इस सब में मैंने y का कोएफिशिएंट, मुझे y को डिलीट करना है, तो इसलिए मैंने y के कोएफिशिएंट चेक किए, तो उनका एलसीएम लिया, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो आई गेट दिस। और यहाँ पे दोनों की साइन भी सेम है, इसलिए मुझे क्या करना है? सबट्रैक्शन करना है। So when I do this subtraction, 9 minus 20. Now please don't forget the integers rule. याद है आपके क्लास 7th 8th के जो भी integers के रूल है? 2 numbers with same sign, add them. 2 numbers with different sign, subtraction, and continue with the bigger number sign. तो आप देखोगे यहाँ पे 9 minus 20, 1 negative, 1 positive. So subtraction and continue with bigger number sign. So 20 minus 9, 11. Okay. And the bigger number is negative. Same way, plus and minus is going to get cancelled. That's why we tried. And this is here. Minus 96 plus 30. Please sign me. No gapla. No. You have to be very careful. यहाँ पे एक ही चीज है. You have to be careful for the sign. So what do I get? Therefore, x is equal to minus 66 upon minus 11. Minus sign cancel. 6 and hence we get x is equal to 6. I hope I'm very clear with this. समझ में आ रहा है? तो हमने इस तरह से सिंपलीफाई किया, we get the value. अब select any of the equation 1 2, ऐसे कोई रूल नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही वाला यूज करना है, यही वाला नहीं यूज करना है. Anyone which you feel comfortable. So I take this, say this is the smaller one. So using this in one. Okay, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है. Why to go for such complicated bigger numbers? I'll go with my original equation. So 3 into 6 minus 4y is equal to 10. So therefore 18 minus 4y is equal to 10. Be careful about the signs. यहाँ पे ये plus है, 18 is positive. So when it goes here, it becomes negative. And what do you get on cancellation? You get y is equal to 2. So you get the answer as 6, 2. I'm very clear with this. Children, please remember your presentation equally matters here because you are not expected to solve by direct method. Suppose आपको कहा जाता है कि using elimination method, you use elimination method, और elimination method का एक ही कोई ध्यान रखना है that you have to get rid of 1. Get rid of 1 के लिए हमें करना क्या होता है? We have to look for the variable
whose coefficients are equal. If not, then we have to multiply the numbers in such a way for the eka that we get the coefficient equal. Then addition or subtraction, we get rid of one and we get the value of one of the variables. Once we get one variable's value, we substitute in any one of the equation and we get the value of the other variable. These are the steps to follow. I hope I'm very clear with it. Okay, and now let's see. Suppose the question I'm taking, I'm not going with any other method. Please try to understand different type of question first. So let's take it as one of the question. Children, I'm aware of it that I have no need to start sending any notes for this chapter. So today I'll be starting with the typing work and I'll send you as soon as possible for previous lesson as well as your elimination method part. I always try that I don't take the same examples of textbook because I want you to try the textbook sums. So please first understand, copy the example which I am writing it, and then try to solve the textbook sums. I know the textbook sums are available. If you don't have any reference book at home, I know that it's like, many things are available on the Google and you get the solution directly. So I'm not worried the answers of the textbook sums because I know that you can understand and you can do it easily once you know how to do it. So more focus is not on textbook questions, but how to solve the sums, right? Once you understand the concept, I think easier for you. आपको कोई भी number या कोई भी questions दे तो आप easily कर सकते हैं, right? So let's take one example here. It says that थोड़ा सा different है, right? अब यहाँ पे क्या करना है? You could see that it is given in the rational number form. So you don't have to worry. The method is same. आपका एक step extend हुआ. What does that step is extended? ये तो हमारा simple form में दिया है. We will leave it as it is. This is our equation 1. और यहाँ हमारा जो second equation है, okay? तो पहले हम क्या कर लेंगे? We will take the LCM. तो जब हम LCM लेते हैं तो 3, 6 और 2 का LCM क्या है? यदि आपको डायरेक्टली नहीं आता तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए और फिर उस नंबर को यहाँ ले जाइए. तो 3, 6 और 2, देखिए बहुत सिंपल नंबर्स है. 3, 6 और 2, तो इसका एलसीएम क्या है? 6. ठीक है, तो इफ आई मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 6 तो यहाँ क्या मिल जाएगा? सो 6 मतलब यहाँ पे 2x minus 3y is equal to 3. I hope that is clear to you. What did I do? Or directly you can say that इस तरह से आप लेंगे कि 3 और 6 का एलसीएम है 6, तो यहाँ पे 6 आया, फिर यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो. I'm sorry, I made one mistake. Okay, so just 2x minus 6 by 6 will cancel and is equal to 3. किस तरीके से? So 2x upon 3. Okay, यहाँ एलसीएम क्या है? 6 है, तो यहाँ पे 2s are और ये 1s are. So 2x minus 5, ये 1 upon 2. 2x minus 5, इस 6 को मैं यहाँ ले गई. So 2 3s are 6, and hence we get this as 2x minus 5 equal to 3. I hope I'm very clear. You know how to find the LCM. So this is the second equation. ठीक है, अब देखते हैं कौन से वाले को हम डिलीट करेंगे. अगेन इट इज आवर चॉइस. ठीक है, पहले तो कोएफिशिएंट रेडी इक्वल मिल रहे हैं तो हम एफर्ट्स क्यों लें. तो हम देखते हैं यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है. ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो. यदि आपको y को एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है. यहाँ मुझे सिंपल से 2 से मल्टीप्लाई करना है. आई गेट इट इजीली. ओके, बट यहाँ पे मैं x को लूंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट एनी वे वी कुड डू दिस सम. तो यहाँ x को जब मुझे लेना है तो यहाँ क्या है? उसका कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट क्या है? 2. तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6. इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 जा. So equation 1 will be multiplied with 2 and equation 2 will be multiplied with 3. I get this as 6x
minus 4y is equal to 12. And here I get 6x minus 3y is equal to 9. Again, I'm saying it has to be up to you which one you take. If it would have been easier for me, I would have gone for y. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन को मुझे मल्टीप्लाई करना था, तो डेफिनेटली y is a better choice. But just to show you, क्योंकि पहले मैंने y को एलिमिनेट किया पहले वाले सम में, तो I'm just showing you कि कैसे भी आप लोग सेम ही आएगा, या x को डिलीट एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, तो वन इज द सेम थिंग, मतलब कोई भी आप चूज कर सकते हो. So solving it, since you see the signs are same, so we will do subtraction. So minus plus minus, पहले से साइंस आप देख लीजिए. So minus 4 plus 3 यानी कि minus 1. 12 minus 9 यानी कि 3. And therefore minus y is equal to 3, मतलब y क्या हो गया? minus 3. I hope समझ में आ रहा है. y is minus 3. minus y is equal to 3, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 या डिवाइड बाय माइनस, जो भी आप कहें. ओके, एंड अब इसको कोई भी एक इक्वेशन में लेंगे. सो आई टेक इट से इक्वेशन 2. सो यूजिंग y is equal to minus 3 in equation 2, क्या मिलेगा मुझे? 2x 2x plus 3. Therefore 2x is equal to 3 minus 3. What is 3 minus 3? 0. And you know that 0 divided by any number, 0 upon 2. What is that? It is nothing but 0. So we get here the solution as 0, minus 3. I hope that is clear to everyone. Yes, समझ में आ रहा है मेथड क्या है? Yes, everyone. This is called elimination method, and I have given you different examples, like 2 to 3 examples to understand the method. Any doubt? Quickly type. I'm giving you a few seconds. So please tell me if any doubts are there. Children, any doubts are there? Then please type it quickly. If not, I can go ahead with the next method, right? The second method which we are going to use is called substitution method. So please quickly, you can give me the remarks and then we can forward it. We can go ahead with the second. I'll continue with the same example here as we are changing the method. It is substitution method. Okay. What I have seen maximum times, generally हम elimination method के पे ही जाते हैं, but just for the sake, generally they don't give you that use this method only. At least ये दो के लिए तो कभी choice नहीं दी जाती है. It is just comes as solve. तो जब solve वाला आता है तो simply आपको इसी तरीके से जाना है, पर आप कोई भी method ले सकते हैं. If I personally advise you, I prefer that you go with substitution. Rather than substitution, you go for elimination method. That is very easier and comfortable. Still, I will show you substitution method because it's there in the syllabus and you need to try all the ways. So हम किस तरीके से देखेंगे? ये हमारी question 1 और equation 2. अब substitution में क्या करना था? Word itself, substitution. तो हमें क्या करना है? एक equation में से एक value बनानी है, एक variable को दूसरे के फॉर्म में डालना है. शायद मैं समझाऊंगी तो नहीं आएगा. Look at it. I go for simpler one. This one. अब यहाँ में इसको मैं ऐसे लिखूं, 2x minus 3 equal to 1. Did you understand what did I do? I wrote y is equal to something. Got it? I hope that is clear. 2x minus y is equal to 3. तो 3 को यहाँ ले आई और ये y को यहाँ ले गई. So I got y का value is 2x minus 3. And now use this in this equation. मतलब हम एक वेरिएबल को दो इक्वेशन दिए हमें, तो कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे, उसमें से एक वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और उसको दूसरे के फॉर्म में लिखेंगे. मींस y is equal to something या x is equal to something. कोई भी चॉइस इज योर्स. और उसे उस वैल्यू को x के फॉर्म में होगा, मतलब y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो x के फॉर्म में दूसरे इक्वेशन में डालेंगे एंड वी सॉल्व इट.
Using this here, what do we get? So using y is equal to 2x minus 3 in equation 1. So what do I get? The equation I just repeated. तो यहाँ पे मुझे y की जगह पे क्या लिखना है? 2x minus 3. So therefore, it becomes like a linear equation with one variable. So we make the habit that we write del cosine minus 2. ये तो 2 इसका बाहर है और y की जगह पे जो लिखना है वो 2x minus 3 is equal to 0. Therefore, opening the bracket, minus 4x, okay, plus 3 is equal to 0. So 3x minus 4x plus 3 is equal to 0. Y as 2x minus 3. Okay. So y is substituting here, 3x minus 2y is equal to, oh, I'm so sorry, it was 6. That's what I got confused, but there's something wrong over. Okay. Now I want you to tell me what are the mistakes. Because this is the common when it comes to distributive property. I have written something here deliberately. So quickly find and tell me. Yes, one of you got the answer from 1. Did you notice what I said? When it comes to distributive property, जो मैंने बहुत में एकदम commonly आपका जो मेरा common example है, somebody visiting your house, okay, and you are two siblings, मतलब आप और आपके भाई हो या आप और आपकी बहन है, ठीक है, और जो अंकल आंटी आएंगे वो आपके लिए गिफ्ट लाएंगे या भाई के बहन के लिए नहीं लाएंगे या उसके लिए गिफ्ट लाई और आपके लिए कुछ नहीं लाए, क्या हुआ, नाराज हो जाओगे ना? तो उसी तरीके से यहाँ पे, you remember this mistake? This comes in the very common one. 2 बाहर का, so 2 will be multiplied with both the terms in the bracket, isn't it? So ये 2 minus 2 into minus 2 minus 4 and minus 2 into minus 3 क्या होना चाहिए यहाँ पे? Yes, correct. That is 2 3s are 6 minus into minus 12. This is a common mistake again. You repeatedly do it, so be careful. I'm trying that I try to solve all your doubts here. So 3x minus 4x minus x, 6 minus 6. So minus x is equal to 0. That means x is also 0. आपको पता है इसका आंसर 0, minus 3 आना ही है. So not an issue. So we know it. So अब therefore y is equal to 2x minus 3. अब quickly यहाँ पे y की x की वैल्यू डाल देंगे 0. And this is y is equal to minus 3. So same way, the same value we get it at 0, minus 3. So this is substitution method. Children, generally you are not given the restriction over using substitution method only. जैसे कि एग्जाम में आपको ऐसे कंडीशन नहीं डालते हैं कि substitution method ही follow करिए या elimination करिए. So the choice is yours. But still, I would advise you that if you're not specified, go for elimination method. That becomes easier because यहाँ पे mistakes के chances बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे आपको simply multiply करना है. Okay, so just request that you try, go to method, learn it. But when it comes to choice, like when something question is not asked, finding x, y is asked, then it is choices and you can select the method. Okay, any doubt in this? Please tell me quickly. You want me to discuss one more sum with this? Then I can. So quickly, let's take it as one more question here. यदि कुछ डाउट है तो क्विकली सॉल्व कर लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे. The question is x plus y is equal to 7 and the second is 3x minus 2y is equal to 11. Okay, so let's solve it by substitution method. Okay, now what is it substitution method says कि कोई भी एक लो. Again मैं कहूंगी कि हम elimination and substitution जब आपको choices दिए जाते हैं कि आप कौन सा ले, anyone you can choose. इसमें कोई ऐसी condition नहीं, this is other way of doing it. ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस टाइम पे यही मेथड करना है, इस टाइम पे यही मेथड करनी है. ऐसा कोई भी रूल नहीं है आपके पास. ठीक है, it is just a choice, it is just an alternative method. वैसे कोई भी choice नहीं है. हम यहाँ पे substitution method use करने वाले हैं. Okay, so how to do it? You can see, look for the simpler value.
जनरली आप अवॉइड करेंगे अपॉन 3 या अपॉन 2 या फ्रैक्शन पार्ट या रैशनल नंबर अवॉइड करेंगे, isn't it? तो इस टाइप का इक्वेशन है, तो सिंपली आई चूज वन ऑफ दिस, या तो y के फॉर्म में x को लिखो या तो x के फॉर्म में y को लिखो. Here I try to take x. Okay, so what I get, y is equal to 7 minus 1, isn't it? ये हमारा 1 है इक्वेशन, ये 2 है. ओके, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे. सो व्हाट डू आई गेट, यूजिंग x is equal to 7 minus y in equation 2. देखिए कोई भी एक इक्वेशन को आप चूज कर सकते हैं, बट ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये ट्राई करिए दैट यू गो फॉर द सिंपलर वंस, जहां नंबर स्मॉल है, कोएफिशिएंट सिंपलर है, दैट विल बी टेकन. सो therefore 3 into, तो क्या है 7 minus y minus 2y is equal to 11. So 21, opening the bracket, be careful. So therefore 21 minus 5y is equal to 11. 5y को मैं पॉजिटिव में लिख दूंगी, so I'll give this number on this side. ये पॉजिटिव हो गया, so what do we get, 10, and therefore y is equal to 10 upon 5, that is y is equal to 2. अब मिल गया हमें एक आंसर, राइट? मेथड सेम ही है, बस यही है कि स्टार्टिंग का थोड़ा सा अलग है. एंड वैल्यू नाउ फिर से भी x is equal to what, 7 minus y, that is 2. So you get this x is equal to 5. So your solution set is 5, 2. बस एक याद रखिए कि आप पहले x फाइंड करिए या y फाइंड करिए. आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिखे, तो जब सॉल्यूशन सेट में लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी अ राउंड ब्रैकेट. बहुत सारे बच्चे करते हैं कि लाइक स्क्वायर यूज कर लिया या कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया. आपके लिए ब्रैकेट मींस इट्स वन इन द सेम, बट इट्स नॉट लाइक, ओके? व्हेन इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसका मतलब कि हम वैल्यू यहाँ वहां कर सकते हैं. व्हेन इट इज अ कर्ली ब्रैकेट, अगेन यू कैन शफल द वैल्यूज, इट इज वन इन द सेम. जैसे मैं लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई राइट 1, 2 और राइट 2, 1. Okay, they both are same. Okay, but when it comes to round bracket, that is what I mean here. If I write 5, 2 and if I write 2, 5, they are not same. And why? That you know the reason, because this we connected with our coordinate geometry, and the coordinate geometry says the point 5, 2 is not same as 2, 5. You know the positions are different, isn't it? And so this is what we have to write here. You have to follow the first x coordinate and then the y coordinate. I hope this method is clear to all of you. Yes, children. So I will be forwarding the notes to you. Okay, there is some doubt with Johnny. I'll just clear it up. So I hope that your doubts are clear now. Any one method you could be take to solve the sum. The choice is yours, isn't it? And any further doubt related to it, please clear it up. Don't wait for the end of the chapter and do it. I told you, so there are 2 exercises which are related to this. Okay, so kindly try to follow it if it is possible for you. Just let me know from WhatsApp how many of you have graph available to you. I want to say, if it is available, then you don't have to reply me. If it is not available, then please let me know. Then I won't go with graphical method. I'll go with other method. We'll go for writing part and graphical method. As and when we meet in the school, we will be doing it now. Okay? And still I'm working on it, that I share the screen and we learn something out of it. So we'll continue for the next. I hope this is clear to you. Everyone who watch video, please go through the concept and try to learn it. If not, any doubt, you can write it here, and my students definitely they can contact me through WhatsApp and clear the doubts. Okay, thank you, children. See you all, and put your attendance in the Google Sheet, please.